अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिए लेकर आया बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीडियो लेजेंड डेली शोज क्रिप्टो माइनर जेट वॉशिंग Nvidia RTX GPUs। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे घंटी के आइकॉन को भी दबा दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आगाज़ करते हैं। फ्रेंड्स, the Ethereum blockchain change over from proof of work to proof to stake, commonly referred to as the merge, effectively meant crypto coin mining with consumer graphics card was no longer profitable. While gamers looked forward to cheaper, new and used GPUs becoming the norm, according to a series of videos posted to Twitter by iLeakVN. GPU crypto miners is a white name appear to be jet washing gear their old mining kit before putting the components up for sale on eBay or local equivalents। आई लीक वालों ने भी पोस्ट की हुई है, आप देख सकते हैं। इन द वीडियो इट इज समवॉट startling to see what is purportedly Vietnam's GPU miners casually yet washing several racks packed with powerful GPUs. Twitter's iLeak VPN shared a collection of these intriguing videos today. Alongside the videos came repeated warnings about buying used graphics cards. The powerful jets from this kind of cleaning system can easily cause potential physical damage. How had miss a random service mount resistor or water ingress into places it might not easily evaporate from. Also, thermal paste or lubricating grease may possibly be removed too, so watch those fans. The water allegedly being used in the jet washing bathing was not particularly clean. It could easily leave deposits behind on the PCB, potentially causing damage that could lead to short circuits or other electrical damage once these products are powered up. In a third video from the same source, we can see impression washing being used on some graphics card PCBs and IOS brackets in a bath of ozone water that is being agitated using an ultrasonic cleaner. Whether this is a second stage of refurbishment or cleaning for the jet washed cars. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।